evening. So, good evening, friends. We'll spend about an hour today on how to appear before an interview board. Now, some of you were there in the interview which I conducted. So, I have already seen about 60 to 70 candidates. Okay. So, this particular presentation is based on my experience of interviewing all of you, and also my own experience in the UPSC. I have appeared before the UPSC about 6 times. So this is based on my experience also in the UPSC. I was also an expert in UPSC interview board for 3 years when I was the Joint Secretary in the Ministry of Defense. So a lot of learnings from that. So therefore, I thought, let me present things. First thing I want to tell you that one of the problems today you face in the interview board as a youngster is that the attitude of the interviewers. Interview koruchi. So most of these guys are very elderly, and most of them perceive youngsters as undisciplined. ये जो बॉयज को लोगों से भावंती ये young पिलावड़ा का भारी undisciplined. They do not read newspapers. They are impatient. They are defiant. You know, empty what a negative mindset, because I sit in the interview board, so most of the interviewers have this kind of a perception. So one of the best ways to overcome this kind of a perception is by demonstrating that you are serious in the business. Are you all getting me? The moment they find that yes, you people are serious into studies, seriously inclined, this kind of an attitude can be greatly dissipated. But I must also very frankly confess that most of you do not read newspapers. Are you all getting me? So now one of the problems of just relying on the digital medium is that you tend to become very superficial. Are you all getting me? So please remember that almost any important interview that you attend, the interviewer would expect that you would have read that day's paper. Some of the 10 re parikha achi 100% तमे 7th, 8th, 9th ର paper ଟା ପଢିଛ. ଆଉ ଯଦି ତମର interview ଟା 10ଟା ପରେ ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ expect କରିବେ that you have read the paper. I'll give an experience of myself. 76 re, so when I appeared for my Indian Economic Service, Dr. Manmohan Singh was in the interview board. जे कि हमारा प्रधानमंत्री थे. He was Secretary Economic Affairs. He was in my interview board. So he asked me that, do you know what is a Laffer curve? So I fell from the skies. I said, sir. District 29 re पठे देजंदी. So I do not know a Laffer curve. I know an offer curve. So then he asked me that, have you not read today's paper? So I said, no, sir. Actually, I started from JNU at 7:30. I am here at 8:30. And from 8:30, because that was my first, pratham thar pa mu Delhi aithili. Tero mu 10टा रे इंटरव्यू थला mo 8:30 को पहुंच जाइथि. कि काले सा कोठी लेट होबो कोन होबो बुझलो तो. So I was very tense, like many of you who and first time mu जाउथली. मु दिल्ली देखि नथली. So se kala je young man,
never go to the interview board without aji baharchi paper re Laffer curve bisare माने आर्थर लैफर गोटे ऑफर कर विषय रे लैफर कर्व ऊपर लिखी छी हम बुझछ तो कथा सो जिमते एटा हा गोटे हिंदू पेपर ओके सो ऑल ऑफ यू वुड इमीडिएटली से व्हिच पेपर डू यू रीड so you will say Hindu but I know for a fact जे तमे खाली कहूचो because you know Hindu is supposed to be a good paper are you getting my point most of you do not read it because firstly it is an extremely boring paper very bore bahut bore paper ta so at least you know if you are serious into civil services you need to read the paper very carefully ଆଉ पेपर कौन टा पढ़िबो इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट एमते नाही जे पेपर टा पढुची 3 घंटा 4 घंटा पेपर पढुची see for instance in today's Hindu there is please note down there is a very interesting write up je law doesn't allow raising of homes of accused माने कहार घर just because you are guilty your house cannot be demolished please note down demolition of houses of accused is an affront to right to life अरे घरटे हेले तमे शेल्टर हेले तना राइट टू लाइफ होबो ना इज एन अफ्रंट टू व्हाट राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 कोन कहूची राइट टू लाइफ कहूची तनो तो घर नथियो तो राइट टू लाइफ अछि की so you cannot demolish somebody's house even if he is an accused you cannot demolish the house you have to follow a certain process so in this judgment the court has said that we have to devise guidelines for this ता नहले तमे जहा घरे देखि भांगी पारो बुझि पड़छ तो so the question that will come to you कोर्ट गोटे इंपोर्टेंट जजमेंट जो जजमेंट रे सुप्रीम कोर्ट कहितला जे you cannot demolish houses of slum dwellers anybody कहितल तो पढैतली Olga Teli. Olga Tellis versus BMC. Please give him a big hand. Olga Tellis. कोर्ट केस थला Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation. केपर केस थला 1985. So 1985 रे, are you all getting me? तर तुमको पचाला जे today this particular thing appeared, Supreme Court appeared. Was there any earlier Supreme Court judgment on this? Are you getting me? तुम यदि कहि दला जे yes sir there was a judgment Olga Tellis versus Bombay Municipality Corporation जो थरे की जेतबेले से माने स्लम डवेलर करो ड्वेलिंग छुरा भांगियो को गले सेतेबेले सुप्रीम कोर्ट सेड no you cannot demolish them without giving them an alternative place to stay कौन जजमेंट हला प्रथम ताको नोटिस को प्लीज नोट डाउन फर्स्ट हला एडिक्वेट नोटिस प्रथम हला कोन एडिक्वेट नोटिस तापर अल्टरनेटिव साइट Are you following me? These are the two decisions. कौन हला जे तमे you should give them adequate notice and secondly even if you give adequate notice you should try to give them an alternative site कारण they are human beings बुझी पड़छ तो right to livelihood is a right to life right to shelter is also a right to life
Are you getting my point? So therefore, this demolition culture, the demolition culture has to be resisted. Because I'm a democracy roche, just because somebody is staying in illegal construction doesn't mean tame taku ghorto bhangi do. बुझी पड़छ ना नहीं. So मु कहीं की एग्जांपल टा देली कि this has appeared in Hindu paper. धर काली दम परीक्षा अछि. से पचाला जे tell me which is the important judgment. So this is the judgment. Do you have any? तबे संगे संगे please remember the moment you are able to say this and also say the BMC judgment, तुमको immediately तमे गोटे grading आसीबो जे तमे 60 ऊपरे. Please try to remember this. जो मन तमरा main written परीक्षा पाए के जाउछो, the interviewer knows जे तमे गोटे solid foundation अछि, पढापडी करछो. माने त तुक्का मार के आसिनो. You have read your constitution, you have read economics, you have read history, तमे गोटे पढिछो. कट रेफर तो अछि. सेमाने इंटरव्यू तमरा डेप्थ टेस्ट करछो. Please note down, this is the most important thing. तमरा केते डेप्थ अछि. गोटे इंटरव्यूअर गोटे इश्यू पे तुमको 10 मिनिट मार देबे. बुझले तो ए ऊपर जदि आ समस्त तो देखुतबे से केमिति करूछि आ सेही समय धर मु तमे से साइंस कह देला जे बीएमसी केस 1985 कर देला संग से समय तमे इमीडिएटली यू गो अबव 60. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैक्सिमम पिला आछंती 50 to 60 जोन रे 50 to 60. About 50% of the students would be in the 50 to 60 zone. 40 to 50 रे आसीबे प्राय 50% पिला. कई 40 रु कम रखिबे. Nobody scores less than 40. 40 to 50 रे about 50%. 50 to 60 रे आसीबे तमारे about another 40%. 10% are above 60 and above. Why I am saying this? Jodi tamare you open well and all the leading questions you answer, immediately an impression is created that you are a 60 plus candidate. Are you getting my point? And that impression will not be whittled down or it will not come down because you have given a wrong answer later. Some भूल answer कलो bluff answer no. Are you all getting me? Still it will not go against you. बुझलो तो जेतर तो चेयरमैन गोटे पचारुची जी चेयरमैन द इंटरव्यू पचारुची से संग से पचारे सर भलो कैंडिडेट बुझी परछो तो सो that impression carries for your entire evaluation. Are you all getting me? बुझी परछो कथाटा तो तेनो इंटरव्यू रे we are looking at depth. Okay. So now let us see one by one what are the things we should see. Go tell a dress. Please note down on the dress. ठीक लागुची कथा ठीक लागुची तुमको? Okay. So किमते ड्रेस थबो. ना गोटे दिन झियो मते पचारले जे हमें साड़ी पिंदी के आसीबू कि हमें सलवार कमीज पिंदी के आसीबू. Please remember the golden principle जो थे तो comfortable. Comfortable अर्थ नो जे टी-शर्ट मार के चल जीवा. Preferably wear a full sleeve shirt. Preferably wear something white, light blue, light yellow. तमन पे तेरो द तम सम जो तमे जो थे comfortable. जो tight pant के भी पिंदिवनी, tight shirt जो पिंदिवनी. You should be very comfortable. से गर्लफ्रेंड सामने रे जीन टाइट जीन मार के जाओ. Not before the interview board. Okay. तम पे जेमती तम पे भी applicable टॉप्स पिंदी के जीवनी. हैला. So dress should be comfortable. You should be very comfortable in your dress. Are you getting my point? तापर होची dress depart. What is department? What is department? 3 D's. First है dress. Second है department. Department है किमित में how are you walking? Your gait. जितने पॉसिबल भीतर को तबे किमित आछो. एमते आछो की एमते आछो की. How you are entering, very important.
These are things which are noticed. डरी आसुचो की स्लाउच करके आसुचो की और स्मार्टली आसुचो की बुझु तो that is what is called deportment. Then demeanor. Demeanor हला तमरो outside behavior. तमरो face टा केमते अछि, outside face टा केमते अछि, कोन ड्रेस केमते चाली के आसला, डरी के आसुची कि रिलैक्स्ड अछि. So be very careful about all this. कहीं कोना सब कहूची टी प्रैक्टिस करी उड़ा को, practice them, no harm. माने निजे घरे ती टिके भलो त बुद्धि पतिओ ती बसियो टिके कहबो ती सर केमते होची देखो, मु थर करूची केमते होची देखो. अरे गुड, no harm. Many great people speak before the mirror. Many great people, भलो speaker, Abraham Lincoln used to stand before a mirror. Bill Clinton was a great speaker, used to stand in front of a mirror. Atal Bihari Vajpayee used to stand in front of a mirror. So dress, deportment, and demeanor. Next asiba, introduction kurche, when you are introducing yourself. So many times you say myself SN Mishra, myself Harish Rawat. There is no myself. Okay. You just say sir or madam, sir, I am such and such. Okay. Now one golden principle you remember, please note down, जे जहाँ तुम्हें CV रे लिखिचो सेटा को रिपीट करिवो. तुम्हें जहाँ CV रे लिखिचो, sir, I did my graduation from there, I did my MA from sociology, I passed after that. माने जेमी तुम्हें लिखुचो तुम्हें से CV रे तुम्हें same thing कहूचो. Are you getting what? It is already there before them. अरे जोटा ता सामने रची सेगुड़ा को कहर पीछे दरकार नहीं. What they are trying to listen from you, जे तमरो किसी special achievement अच्छी. कौन special achievement अच्छी? Academic field रे, sports field रे, creative field रे. जो तुम्हें पूरा क्लियरली लिखिन तमरो बायोडाटा रे. But you say that I have done my graduation, BTech and so on. Basic qualification to कहबो. तब कोई पे होता पर sir, I have mentioned all my things, but I would like to mention this specifically. माने जेतल तमे तम जो को इंट्रोडक्शन करिवो सेते बेले को एस्पेक्ट तुमको तमे रिवील करबो चाहूचो सेटा को कहबो. बुझ पड़ो कथा. तब तुम कहबो आई एम ए ट्रेन्ड ओडिसी डांसर and I passed out to this. Somebody has done I am Bisharad in classical music. Somebody would say no sir, I am a tracker. Somebody would say that I am very good in content writing. So please highlight, please note down, please highlight your major achievements. Are you getting my point? तमे कौन करिचो which you have not adequately mentioned in your CV. Is that clear to all of you? Is that clear to all of you? तापरे केबे हेले कहबनी जे sir, I appeared before the OPSC twice, I failed sir, this is my third time. Never do this. At least 10 to 11 of the candidates, kind of coaching. This is based on what I've heard from all of you. बुझी पड़छो माने हमर गोटे सब बेले रहूची जे हम कोनटा फेलियर करछु सेटा न कहले भारी काम भल लागे नै. कोन बुझो तो कथा तुम माने खाली कहूत खाली मु कोट फेल मारली सर, मु सर एथर तीथर झुंटिली सर. Are you getting my point? Not necessary. Not necessary. You don't have to reveal your failures before the interviewers. माने तमे बेसी बड़ी जोड़ी कहबोनी कि तुम फेलियर कथा कहबोनी. तर कहबो जे सर, these are my achievements and I look forward to joining this service. जहाँ थी वो अचीवमेंट थी वो सोशल सर्विस करछि माने आई रिफ्यूज टू बिलीव जे कहारे एमती गोटे नाही जोटा किछि भलो क्वालिटी नाही.
जहाँ हो पछे तमे कह मु सोशल सर्विस करे सर माने प्रत्येक मनुष्यर किछि भलो काम से करिछि माने धर मु देखुछि जेते गोटे झियो समते लिखुछन्ती कुकिंग अरे कुकिंग खाली ना लिखुछ सिटी कोन ताकू छेनापोड़ खुएबो कि से कहबो कोन कोस्ता खुएबो मते किठी आर यू ऑल गेटिंग मी अरे तमरो जो होम साइंस अछि प्लीज रिमेंबर मजर कोनी तमरो जो होम साइंस अछि तमे कुकिंग कहले गोटे अछि इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस ए में कहबो जो थरे गोटे लोक तको पचारिबो तमे कहबो म कंटेंट राइटिंग करे I found 4-5 of the students, they have written, they do content writing. How they give thrilling answers. कौन से content writing करछो कौन कहाँ पर लिखुछो ओको Right, my real hobby is hiring. So it feels like it doesn't go with civil services. it doesn't matter wherever you are what see जो जगह तमे अछो से जगह तमे केमती एक्सेल करिछो that I think you should highlight. I am just putting this very clear. And it is not important that I tadi pakeli kholi pakeli semti nai. Teme कहबो जे नाइ मु मोर I am doing this and I am respected for my proficiency in hiring. माने तमे जो कथा कहले जे किछि नथियो सेमति किछि कार न थाए सेमति न थाए बुझला त किछि एमिति कोन से लोक नाही जे से किछि तार अचीवमेंट नाही हम जानि पड़ने तार कोन पोटेंशियल अछि कि हम भीतर गुड अछि बुझल त हम पूछु तो कथा एनीवे तापरे हॉबीज रे तुमको से तुम गोटे मन रख जितने तुम से कागजटा खोलिबो तुम इंट्रोडक्शन पर प्लीज नोट फर्स्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन तापरे इनवेरिएबली दे विल लुक एट योर हॉबीज जितने पर इंटरव्यू हुए जो मझी जो चेयरमैन जे थिबो he or she will proceed in a particular sequence एमते नहीं कि से गोटे पचार दबो कोन सुसुरुचि पचार दबो ना नथिंग लाइक दैट जी चेयरमैन का काम हला तुमको पचारिबो तमर कोन हॉबीज अछि तमे कोन एम्बिशन अछि तमर लीडरशिप तमर कोन स्पेशल कथा अछि सेरा से बुझियो सो से माने फर्स्ट देखिबे हॉबीज पर से देखिबे ऑप्शनल पेपर एरा कहा देखि कि मु लिखिनी मु मोर एक्सपीरियंस ऊपर आज सकाळ बसी कि लिखि बुझो तो कथा हां ऑप्शनल पेपर देखियो धर ऑप्शनल पेपर तुम लिखछ सोशियोलॉजी के लिखछि एंथ्रोपोलॉजी के लिखछि एग्रीकल्चर के लिखछि ज्योग्राफी से चेयरमैन संगे संगे जो जदी स्पेशल पेपर के लोक बसतिबो त कह मिस्टर मिश्रा धर मु इकने मिस्टर मिश्रा से देखे दबो तमे जेतले मिश्र पाळी आसीओ से तको ऑप्शनल पचारिबो एमती नहीं कि गोटे पॉलिटिकल साइंस लोग तुमको पचारिबो नो इट डजंट हैपन दैट बुझी पड़छु तो सेठी जी तार डोमेन एक्सपर्टीज थिबो से तुमको जेरा करियो नॉट अदर्स मु जेमती सब विषय तुमको जेरा कर दूची सेमती करा जायनी मु केवल पॉलिटिकल से चेयरमैन प्रथम कथा ही देखि दियो जे कहार कोथाय डोमेन एक्सपर्टीज अछि से कहता अच्छा मिस्टर मिश्रा यू आस्क क्वेश्चंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी को ज्योग्राफी पचारि बुझ पड़तो कथा माने प्रत्येक निज निजर एरिया रे थिबे एमते नाही जे से ज्योग्राफी वाला तुमको इकोनॉमिक्स आसी पचारिबो एमते नाही जेमते हमर सब जनता समत सब जानि चंती सेमती हुए नहीं बुझल कि सर नमस्कार सर स्क्रीन रे आसले भलो होंता सर कौन कहले आपण सर स्क्रीन रे हां ए पोजीशन रे रहले सर हमको टिके भलो लागि दंता बुझियलानी स्क्रीन रे आसंते आपण आपण विजिबल हो नांती साइड ही होतले आपण विजिबल आफ्टर इंट्रोडक्शन कोन हला हॉबीज पर कोन हला ऑप्शनल पेपर्स ना प्लीज रिमेंबर तमे जोटा ऑप्शनल पेपर हबो सेथरे डेफिनेटली दि गोटे के अछि एक्सपर्ट अछि से तुमको बेस डेप्थ रे नबो तमे भाबिबनी मु इंजीनियरिंग प्लस सोशियोलॉजी मारची मते पचारिबेनी आजिकल कोन होची साइंस पिलाडा को सब आर्ट सब्जेक्ट होचोंती तांको ऑफ कैमरा है जाउछंती कोन कहले आपण कैमरा फ्रंट रे ठिया हुंतो कोन कहले कैमरा फ्रंट साइड ठिया हुंतो क्या नहीं
सर आपण कैमरा सामने टी छिड़ा हुंतु आपण माने टोटल देखा जा विजिबल होनांती ओ हो अच्छा पूरा एई- गायब ही जाउची ना कोन अच्छा हो एई पोजीशन रे ठीक कोटी कैमरा अछि रे एटा कैमरा ना कोन सर फ्रंट रे बस से 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 हो सर, हो ठीक ସେଇଠି अछि ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ସାର୍। एबे देखा तो ଆଜ୍ଞା सार। आगे सर हो हो ठीक अछि यस सर ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଟା ଯୋଉ ନଥିଲା ଗୋଟେ ସିନେମା ନଥିଲା କି ଗାୟବ ହେଇଯିବ ସେ କ୍ୟାମେରା କୋଟା ଏ ଯୋଉ ଶ୍ରୀଦେବୀ ସେଥିରେ ଥିଲା मिस्टर इंडिया ମୁଁ ଏଥର ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ করে ଉଡିଗଲା କି ଆଉ ସୋ ସାର୍ ପ୍ରଥମ ହେଲା ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ହବିଜ ଥର୍ଡ ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ ପେପର ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚେହେରାରେ ଗୋଟେ ଡର ରହୁଛି ବୁଝିଲେ କି ସେ ତାଙ୍କର ଚେହେରାରେ ଡର ରହୁଛି ସେଇଟା ଫସିଯିବି କି ଆଉ କଣ ବୁଝୁଛ ତ କଥା ଆରେ ଆର୍ ୟୁ ଗେଟିଂ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ତେଣୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଓକେ ତାପରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ଲିଜ ନୋଟ୍ ଅନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତମ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ରହୁଛି ଓଏସ୍ ରେ ତମେ ଓଡିଆରେ ବି କହିପାରିବ ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ ମିଶାମିଶି କରି ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ ମିଶାମିଶି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ତମେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଅଛି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମତେ ଇଂରାଜୀ କହିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ତମେ ଇଂଲିଶ କହିଲ ପ୍ଲିଜ ରିମେମ୍ବର ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଭେରି ଭେରି କରେକ୍ଟ ଇଂଲିଶ ଯାହା ତମେ କହିବ ସେଟାକୁ କରେକ୍ଟ ଇଂଲିଶ ଟା ନିଶ୍ଚୟ କହିବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅନେକ ତମ ମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଗୁରୁ ଚାଣ୍ଡଳ ଦୋଷ କରୁଛ ବୁଝିଲେ କି ତମେ ସବୁ ମାନେ ତାର ଯୋଉ ମାନେ ଇଂରାଜୀ ଟାକୁ ଏମିତି ଭାବେ କାକୁଟି ଭଳି ଖାଉଛ ଆଉ ଭାରି କଷ୍ଟ ତେଣୁ ତମେ କରେକ୍ଟ ଇଂଲିଶ ଟା କହିବ ଏତେ ମୋ ଭଳିଆ ଫ୍ଲାୱର ଇଂଲିଶ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବଟ୍ ୟୁ ସୁଡ୍ ହଁ କୁହ ନର୍ମାଲ ଇଂଲିଶ କହିବ ନର୍ମାଲ ଇଂଲିଶ କହିବ ଆଉ ନର୍ମାଲ ଓଡିଆ କହିବ ବା ନର୍ମାଲ ଓଡିଆ କହିବ ବଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଯେ ତମେ ସେଇଥିରେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହବ ମାନେ ତମେ ଲାଗିବ ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝେଇ ପାରିବି ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଧର ତମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସାର୍ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଇନ୍ ଓଡିଆ nobody will take it against you कौन सा ओडिया कौन कहूँ मु ना नॉट इन द ओएस एग्जामिनेशन कारण इवन इन द आईएएस एग्जामिनेशन मु देखिछि जदियो पिला इंग्लिश रे कहउछथि सन हिंदी रे कहले मते सने दे डोंट टेक एक्सेप्शन माने प्लीज रिमेंबर द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज कंटेंट प्लीज नोट डाउन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग होची कंटेंट बुझी परछो इट इज नॉट द लैंग्वेज दैट यू आर यूजिंग तमरा कंटेंट अछि कि नहीं माने गप मारुछ कि कंटेंट कहूछ आउ गोटे जिस मन रख वेरी वेरी इंपोर्टेंट गिव वेरी प्रिसाइज आंसर्स आई फाइंड मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स पाचे कथा खाली गप तागरे दी कथाटा को से लंबा कथा कहउचंती जस्ट गिव एन एग्जांपल धर मु तुम कहली जे व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट तब कहबो जे फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री तमें ताको देखि 50 लाइन तापर कहया दरकार नहीं सी ताको तापर नेक्स्ट करिया कथा बुझियो तो यूज सब बेले आंसर शुड बी वेरी फोकस्ड एंड प्रिसाइज माने योर आंसर शुड नॉट बी इन सेवरल सेंटेंसेस आर यू ऑल गेटिंग मी तर मु पचाली व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी अकॉर्डिंग टू वेबर तमे कहबो ब्यूरोक्रेसी एज पर वेबर इज अ रैशनल लीगल सिस्टम which is based on hierarchy that's all से तापर ताकू जीवो को लीगल टा कोन रैशनल टा कोन मैं सब गुडा को गोटे थर बुझिबार दरकार नै कारण से आरोपटे गोटे गधटे नै से ताकू जोना तमे कोनटा कहूछो आर यू ऑल गेटिंग मी से धबो कैश तो धरिवो से निश्चय धरिवो कैश टा ड्रॉप करिवोन जमा बुझो तो ताकू तमे बेसी ज्ञान देखिबा दरकार नै किंतु प्रिसाइजली तो कह एनीवे सो लैंग्वेज शुड बी कंफर्टेबल एनर्जी लेवल वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्लीज नोट ऑन एनर्जी लेवल अनेक समय लागुची जेमती नौंग दुर्भिक्ष तुम फेरिक आसछ दी दिन ला खाइन कि सरा गनोळे हेची बॉयफ्रेंड साकरे कि मां गाली दीची कि सरा बापा सरा कोन किछि कोनु खाली सोउचु खाली केते सोइबु तू हला तमरा एनर्जी लेवल शुड बी टिके प्राणायाम वगैरह करो टिके एक्सरसाइज करो प्लीज रिमेंबर वेरी वेरी इंपोर्टेंट गोटे बेसिक एक्सरसाइज दिन गुटे करी पूरा एक्सरसाइज न कले भी
तमे you must you must do stretch बॉडी टा को पूरा स्ट्रेच कर दो 5 मिनिट रे तमे एंटायर बॉडी टा को स्ट्रेच कर दो हला बुझी पछ कथाटा तमे धर नेक एक्सरसाइज धर एमती I just do 15 minutes thrice a day and at the age of 69 7 घंटा इंटरव्यू पर मध्य मु देखु लागु तुम एनर्जी कमे वाला लागु तुमको मु सकाळ 5 टा उठले 5 टा उठी की 2 घंटा पढ़ी की नोट करला पर मु तबरे इठी आसी बुझु तो कथा बिकॉज़ आई डू बेसिक एक्सरसाइजेस हम कथा बुझो तो मु एम तो जिमिंग फिल्म किस नहीं सो तमे एनर्जी लेवल टा वेरी इंपोर्टेंट प्लीज नोट डाउन एनर्जी लेवल एम तो लागबनी ए सब मरि गला कि माड़ खाइ छि कि रे काहे कि मोटा सुखी छि रे कोन है छि आसेनी कि पैसा आसेनी बापा ठू कोन टा असुविधा है पैसा के रही जाइए अरे बुझो तो कथा जमा एनर्जी लेवल टा भल रखियो तापरे रीड दी लेटेस्ट न्यूज़पेपर एज आई सेड लेटेस्ट न्यूज इन द न्यूज़पेपर्स 100% तमे पढ़ी के जाइथिबो कहबनी जे नाइ सर टी लेट हेला उठिबार सर पेपर टा देई नथला सर पेपर टा देई नथला सर कोन करबी सर संभवतः देई नथला ना नो एक्सक्यूज if you are appearing for the interview it is expected that you have read today's paper दी गोटे किसी इंपोर्टेंट कथा अछि जे तुम सरा मिस करे छ फसबार चांस अछि हला तापरे please note down that questions which will be asked can be either a factual question please note down this is very important is either a factual question or it is a debatable question. All of you please note this point, it's very, very important. There are more pacharli, what is the expected GDP growth of India as per the Reserve Bank of India or as per the economic survey? This is the question I ask you. What is the expected GDP growth as per the economic survey of India? It is a factual question. So answer is 6.5 to 7. Thomas, sir, I think it is 6 to 6.25. Or sir, I think it is 7.3, sir. Lord do. Are you getting the point? जो फैक्ट अच्छी से फैक्ट को से तुमको कहूँ गोटे खाता कर से तुम जहाँ बेसिक डाटा नोट कर रख बुझ कथा बेसिक फैक्ट को नोट कर रख है डाटा जो न जान नाई सर आई एम नॉट वेरी श्योर नो इश्यूज से बसिक गोटे निर्मला सीतारामन हमारा कौन दरकार अरे गोटे पॉइंट ना कौन कौच मोदी सर सर कहते सामने गोटे टेलीप्रॉम्प्टर अच्छी सब लिखा अच्छी तेरे कहूँ तुम बहुत जरा एत बुद्धिया लोकटा कर सामने बस टेलीप्रॉम्प्टर अच्छी सब सो एनी क्वेश्चन which is seeking a fact you have to give either an answer correctly or you don't give an answer. Don't make a guesswork. Are you getting my point? Jomma guesswork maran. अब particularly ये जो confident माने bluff टा any interviewer will know जेटा उटा confidently bluff मारुची ये हार्दिक पांड्या भया शॉट मारुची धरा पड़ियो अरे सी को रोहित शर्मा है जीवन कौन हम बुझो तो कथा so one type of questions are factual questions so that is why I am requesting all of you keep a data bank basic data bank कौन data bank रखियो कौन data bank रखियो जे basic information about India बुझलो तो इकोनॉमिक डेटा ऑफ इंडिया बेसिक इकोनॉमिक डेटा से डेटा फेटा सब तुम कहूँ कहीं कहूँ डेटा कहूँ से डेटा गुड़ा मन रखियो तुम कह जे सारा मत मन रुमा मन न रही ओएस हो पार ना जो बेसिक डाटा तर किए कहला अरे व्हाट वाज द एग्रीकल्चरल ग्रोथ दिस ईयर
what was the agricultural growth this year? कहला ठीक है? What was the agricultural growth this year? कितने? कितने? 1.3%. तमें कहो sir, I think it is around 3%. बोला, खाइला, मट्टे खाइला. So ए गुड़ा का सबू माने over गोटे धर पहुंचे डेटा रे गोटे हला overall economic growth data, please note down. Overall economic growth कितने हला? I'm just telling you कौन कोज एमिते नहीं जे डेटा सा 500 डेटा मन रखियो नहीं. Basic information हला कौन ना गोटे हला overall India रा economic growth कौन है ची and growth of different sectors. एट तुमको नहीं सर मोर मन नहीं मैन्युफैक्चरिंग नहीं सेटा मन रखियो पड़ो 100% मन कहीं मन रखियो पड़ो तला मैं जानिमा जे डिफरेंट सेक्टर टा किमिति प्रोग्रेस करूची. आर यू ऑल गेटिंग मी? सो फैक्चुअल डेटा सेमति करके तमे सो डेटा बैंक करियो. मु तुमको सिखै देबी डेटा बैंक कर दो बुझी पड़छ कथा तो बेसिक फैक्ट्स छोड़ा करके 4-5 पेज तक रख दो. सब दिन करे दरकार नहीं करि रख दो से परीक्षा पूर्व तो देखियो ताले तमे आखि मान नजर मारले तुमको औ डिबेट हबनी. तापर हला डिबेटेबल इश्यूज. प्लीज नोट डाउन डिबेटेबल इश्यूज. दर मु तुमको पचारली जे इफ ए रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम बांग्लादेश शुड इंडिया extradite Sheikh Hasina? Please note down. If a request comes from Bangladesh for extradition of Sheikh Hasina, should India agree to this? Now, this is a debatable question. Please note down, this is a debatable question. Have you understood? This is a question which is debatable. Kichh log kahe yes, kichh log kahe no. किंतु तमे एटा को सेमति जवाब दे परिबो. सो जिकोने से गोटे इश्यू रे डिबेट होची बोले तमर काम हला टू ब्रिंग आउट द टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स. जे one set of people believe that this is how it should be done. The other people think that this is, but my assessment or my suggestion would be as under. तमे जहां भी सजेशन दबो, please note down, it should be factual, logical and objective. तीनटा बहुत इंपोर्टेंट वर्ड मु लगेली. कौन कौन लगेली? फैक्चुअल, लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव. मु कहबी धरो जे सर हमर बहुत भलो ट्रेड तंग संगर अछि. वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन बांग्लादेश. वी हैव अ लॉट ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स देयर. तेनो आमे सिटी पूरा वी कैन नॉट blindly look at Bangladesh. We may not like the present government, but we cannot say that no, we have no interest there. So we have an interest. That's a fact. Logic कौन हला कि जो थे हमारा interest अच्छी से थे हमें relationship रखिए. Objective टा कौन हला जे there is an extradition treaty with Bangladesh. There is an extradition treaty with Bangladesh. जोटा कि पाकिस्तान संगे नहीं. बुझी पड़ सके. एक्सट्राडिशन ट्रीटी हला जे तमर गोटे बदमाश जदी बांग्लादेश रे बसिची तमे यदि बांग्लादेश को कहबो ताको पठाओ हमर एठी ताको जेरा करिवो ताल ताको पठाय पड़ो. जो कंट्री संगरे तमर एक्सट्राडिशन ट्रीटी अछि तमर जदी बदमाश से देशर तम पखर अछि कि तमर बदमाश सेठी अछि तमे यदि कहबो से बदमाश को एठी पठा ताको हमें हमर कोर्ट डिसाइड करो ताको पठाय पड़ो. सो कमे कहबो जे legally, since we have an extradition treaty, we cannot legally say no. Are you getting my point? But, please put a but. But that request has to come from an elected government. Mo reply dochi are mo reply dochi. Eita moro reply hochi. Mo kochi je we have a lot of
trade interest, we have a lot of economic interest, and we share the longest border with Bangladesh. So it was so fact achi. But I also know that I have an extradition treaty with Bangladesh. So it would be illegal on my part to say no. So, but I then will say, but that request cannot come from Muhammad Yunus. Muhammad Yunus is not an elected. He is an interim leader. So if there is an election in Bangladesh and the elected government makes a request, then I think, sir, we are legally bound to do this. You'll get 10 out of 10. बुझी पड़छ ना नहीं तेणु जहाँ तो बुझी पचारुची फैक्चुअल कथा का इजी बट डिबेटेबल इश्यू करे you should be very, very careful. The Palestine Jew conflict चलती है, Hamas और Israel conflict चलती है. Okay. Now my friend Malay Mishra ji की पढ़ूँ तुमको, so he takes a position that we should support the Israelis. Large number of students in America feel that the Palestinians are more justified. Are you getting my point? तेणु से गुड़ा करते तुम्हें आंसर करूचो सेतेबेले you have to be very, very careful. Are you getting my point? जितने बड़े controversial issue आसुची, debatable issue आसुची, से ठीक तमें जो आंसर टा करूचो, it is better to show to an expert. Are you all getting me? एई जिते सब करंट अफेयर्स को आंसर टा होची, तम माने मते गोटे मेल करी पठै दियो, ताले मु कहि दिबे आंसर टा ठीक होछ ना, तमर कोन आंसर टा होची ब्रीफली तमे गोटे मो मेल रे पठै दबो. क्लियर? को हाँ हाँ अरे बाध्य बाध्य किसी उपाय नहीं माने हाँ देखो जोटा तमे जो थर तमे एग्रीमेंट हेची तमे सेट यू कांट कम आउट ऑफ इट बिकॉज़ यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ हसीना सिमते हबनी ना. आर यू गेटिंग मी पॉइंट? Because you are bound by international law. You are part of an international law. You are not a standalone country. Tapari no guesswork, no confident bluffing. Current debates re kon perspective hala, detailed perspective, and then your insight. And please remember, content. Please note down diet, data, logic, and no bias. No bias. Please note down, no bias, unbiased. Kimti bias asla? Nahi sir, Narendra Modi kohichonti sir kimti habani eta. Na. Narendra Modi Bhagavan nuhanti. Hala. So we will go. Are you getting my point? As an applicant in the civil services, you have no ideological bias either towards Rahul Baba or towards Modi Baba. So you are not batting for anybody. That is biased answer. Aji one of the biggest problem in India is most of the people kahan se tama argument kar paibani because they are either pro Modi or anti Modi. YouTube रे देखियो साला से खाली से रविश कुमार का को गाल देबे, आओ मेन मीडिया में देखिए साला से मैंने रविश कुमार को गाल देबे. Are you getting my point? So please go into the data, the content, logic, and no bias. This is very, very important. Are you all getting me? So having said all that, we go to the next step. We go to the next step. I intend to cover quickly today. Ketha bailan kola? Aao adha ghanta nei paribi? Kichh asudha nei tomar? You are all okay? Huh? Yes. Mate 8टा बेलू कहबो हला. So we will cover economy, polity, current affairs, and international conflicts, and some miscellaneous issues. Hela, eta utke we will go into that. Now, many of you have covered many of the economic issues, but still then I will go through that because some of them who are going to take the interview, hela. कौन कहला कौन है
एटा नहीं छवि नहीं जा मो तो शेयर कर दवा ए शेयर कर दवा तू दे दी तो सेटा को शेयर कर दो तमे जने नहीं कि तो समस्त से शेयर कर दो हला तो वन ऑफ यू प्लीज टेक दिस ए जो मोर पेन ड्राइव टारे जो अच्छी सेटा को शेयर कर दो हला जने वन ऑफ यू टेक चार्ज ऑफ दिस वन ऑफ यू टेक चार्ज सो दैट एवरीबॉडी रिसीव्स इट ओके बुझलो तो कथा economy रे please note down 100% there would be some questions on the general budget and the Odisha budget. I have prepared in such a way जे जहां क्वेश्चन आसीबो एथे मु कर दी आंसर कर दी इकोनॉमी पोर्शन हला तो जेमती डिफिकल्टी हो गरे मैक्रो इश्यूज रे प्लीज नोट डाउन जनधन ऊपर क्वेश्चन आसीबो कारण जनधन रे 10 वर्ष हिच प्लीज नोट डाउन जनधन completes 10 years. Jandan program has crossed 10 years. सेतरे कौन जानिया पड़िबो हम जनधन रे केते अकाउंट अधिया खोलिची प्लीज नोट डाउन व्हाट आर द थिंग्स वी शुड सी लिसन टू मी खाली फिर जनधन अकाउंट तरे हमर अछि सेतरे में कोन कहबा आमे कोन खाली जनधन अकाउंट रो भलो कथडा कहबा ना आमे मध्य कहबा जनधन अकाउंट रे कोन कोन स्किल व्हाट आर द थिंग्स which are yet to be implemented. All of us know that more accounts have been opened. So the question comes, tell me after 10 years, what are the areas where Jan-Dhan program has not performed as per expectation? Cheta kahidobo se paibo wes कहला inactive accounts आउ कितने परसेंटेज अछि हलो तो चितपटंग हला ना नहीं मते कोई इनएक्टिव अकाउंट अछि मु कहले केते परसेंटेज अछि से खराब कथा कहनी से खराब कथा कहनी 4 years back it was 40% now it is around 30% please note down dormant account जोड़ा किसी काम नहीं तथापि it is quite high बुझिरो तो केमती डेटा आनली कंटेंट आनली सिरे एटा ठीक हला कि सारंद्र ठीक हला तार ठीक हला से ठीक होतला किंतु डाटा तार नाही डाटा तार बुझि परछ तो सो आउट ऑफ जनधन रे मेन प्रॉब्लम होची जे ए पर्यंत जनधन अकाउंट रु समान लोन पाउ नांती लोन दैट अकाउंट इज नॉट हेल्पिंग देम इन गेटिंग लोन्स अरे गरीब लोक जहा पखरे अकाउंट अछि से कोन कर खाली ओवरड्राफ्ट करछि अरे ओवरड्राफ्ट करछि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अछि लाख टका रे किंतु दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव वाज जे से गोटे इन्वेस्टमेंट करिवो सेठु लोन नबो एटा फैसिलिटी एपंत हे मेनी कंट्री हला ब्राजील हला दे हैव डन वंडरफुल जनधन बेला का कोन अछि जो थरे की पुअर पीपल आर बीइंग गिवन लोन्स इट हैज हेल्प्ड इन इन्वेस्टमेंट एबे जनधन अकाउंट लिंक हेनी मुद्रा संग्रह अरे मुद्रा से धर बैंक रे से जो लोन नोक चाहूची गोटे कार नोक चाहूची सो आ सम ऑफ द कार फेलोज के तमे कला नाइ सर सेटा को खाली जनधन रखिछु सर जो ओवरड्राफ्ट ना पाई ना बुझी परछो तो कथा खाली गोटे डिपॉजिट होबा पई गोटे उठे पे टका उठे पे हिची कि तार जो लार्जर पर्पस फॉर टेकिंग लोन्स इन्वेस्टमेंट दैट इज नॉट बीइंग डन अरे वेटी में पॉइंट तो जनधन टा टिके पढ़ दो जनधन टा पढ़ दो तापरे रेपो रेट सीधा टिक पढ़ दबो रेपो रेट प्लीज नोट डाउन रेपो रेट रे गोटे कंट्रोवर्सी हेची जे गोटे रेपो रेट रे देखो प्लीज नोट डाउन रेपो रेट गोटे कंट्रोवर्सी हेउची रेपो रेट रे प्लीज नोट डाउन गोटे कंट्रोवर्सी होची जे रिडक्शन इन रेपो रेट या ऊपर गोटे कंट्रोवर्सी होची जून 2023 रे
सरकार को बढ़ेइथिला एमपीसी बढ़ेइथिला 6.5%. Please note down. The last revision in repo rate was in June 2023. Repo rate कौन हला? Short term borrowing rate, short term lending rate to the banks. So there are two members in the MPC, Monetary Policy Committee. गोटे हला Professor Burma, आउ जने हला असीमा गोयल. Those of you who are seeing me online, please note it down. A data member right from June ru sane कहउचंदी माने June ru जे रेपो रेट टा कमा, रेपो रेट रे कमेले ग्रोथ टा बेटर हो इंडिया. प्लीज नोट डाउन. जदि रेपो रेट टा कमेबा बुझी पतो नाटक कहले विक्रम. If you reduce the repo rate, then the growth will increase. It किए कहूची प्रोफेसर वर्मा और असीमा आउटसाइड मेंबर कंसिस्टेंटली कहउछन. किंतु आमर जो गालुआ अछंती पार्टी अछंती आरबीआई रे गवर्नर डेप्टी गवर्नर सर कहउछन नाइ नाइ फूड इन्फ्लेशन ता बहुत अधिक अछि. एंकर कोन होची फूड इन्फ्लेशन. फूड इन्फ्लेशन एते हेउची तेनु आमे इटाकू रेट कमेबानी. Have you understood the controversy? The majority is saying since food inflation is high, we should not reduce the repo rate. कौन होगा ताले आहुरी इन्फ्लेशन टा बढ़िबो. किंतु एमाने कहउचंती जे फूड इन्फ्लेशन टा कमी जाउची. तेनु फूड इन्फ्लेशन जे कमुची ताहले आमे रेपो रेट टा काहे की कमेबानी. आमर जो ग्रोथ टा अछि इंडिया रा ग्रोथ जो अछि we can achieve around 8%. आमे बर्तन अचीव करछे अराउंड 6.5%. आमे किंतु आराम रे आउट 1% ग्रोथ आमे अचीव करिबा. प्लीज नोट डाउन दिस पर्सपेक्टिव. बुझला बुझला पर्सपेक्टिव. One perspective is that we should be careful because food inflation can lead to further inflation. The other person would be saying that no, let's not be very worried about inflation. We want growth so that India achieves its maximum potential, which is around 8%. I'm at 1.5% पछरे अछि. So जे तुम पचारला जे जो रेपो रेट ऊपर जे पचारला जे do you think that do you know that there are some dissenting members who are saying that repo rate should be brought down? What is your view on this? तमे पूरा चितपट रहि जो चितपटा एकदम पूरा दुमरा रे जो बाउंसर भले मुडरे खाइ की सब स्टंप पर पड़िबो एकदम हला. किंतु तमे जदि जानि छ तमे को नाही सर देयर इज अ कंट्रोवर्सी. So these are the two viewpoints. Then they'll ask what is your viewpoint. So that is where you should come up with your own assessment, where you can say that I think, sir, we should try to see how growth can be, because if the cost of credit is less, then business will be better. Business will be better. This can be a viewpoint. That is my viewpoint, which I have expressed in the one of my editorials. So that's a viewpoint. Kintu say viewpoint ta emite no je seita bedara boli. But that's a viewpoint. So many people have written back to me saying that it's a very good viewpoint that you have given. Are you all getting me? Repo rate. Hala. Tapar hala e-commerce. Please note down e-commerce. I would hala e-commerce. E-commerce upre ek khali note kar jao. E-commerce upre amaro goal कहूची जे ए जो e-commerce होची एथरे retail traders गुड़ाक they are getting affected. So therefore he is saying our employment will come down. Aim jati chalibo ताले e-commerce will be about 40% of the total trade. बर्तन about 10% अछि. So 10% of 40% हेजी. ताले बहुत लोगों का employment चलेगी. So they will ask you that this statement is there. How do you react to this? How do you react to this? Okay. So say thre
तमे कहबो जे वन ऑफ द बिगेस्ट इशू होची ई कॉमर्स रे प्रेडेटरी प्राइसिंग. प्लीज नोट डाउन. Predatory pricing. What is predatory pricing? When the price is less than the cost. The price is less than the cost. Big pocket look, they can sell a particular item where the retail fellow cannot sell at that rate. So therefore the question is, this is the predatory pricing kim check by going to the Competition Commission. Please note down. How do you check this? By going to the Competition Commission. Jimti amaro US re जिम तमर यूएस रे तमर ये हमर कोन कहलो ता नाटा हमर हां कोन कहलो हमर ई जो कोन कहलो ता ना हां ए जो ना ये जो प्रेडेटरी जो कोनटा कहलो हमर अरे जो मलिंदा फाउंडेशन तार कोन बिल गेट्स सो बिल गेट्स अगेंस्ट मध्य थिला जे से माने रिक करूची. So when competition is being stifled, so you can go to the e-commerce, you can go to the Competition Commission. So I said the idea is not to deny e-commerce but to report predatory pricing to Competition Commission. If there is an evidence of predatory pricing where they are selling at a rate which is absurdly low, then we should approach the Competition Commission. The idea is not to close e-commerce. Because e-commerce is also bringing a lot of competition, quality, variety to your homes. You don't have to go to the shop. So you have all the places, Bohitam Papa Asla, Bhagri Booking Asla, Jaldi Asla. You don't have to really move to a bookstore. So e-commerce how to look up PLI? What dumping. Dumping also is the same thing. Dumping is also predatory pricing. That means you are selling at a very, very low rate to capture a market. Again, dumping would be captured by CCI. Please note down. It will be attracted by CCI. अरे बुझो कि नहीं तेनो आमे लीगल रूट नहीं करी तब करिवा कि नहीं आमे नहीं सब आसीबनी से अमेजन कहबे सर तू पैसा दे तान तते मु अलाउ करिवि बुझो तो एडा सब तार पैसा खाइबा चक्क तकर अरे बुझो कि नहीं एक भाई पैसा अछि नाले देखछो ठीक है सर पैसा को दियंतु सर इलेक्शन होवर चांस अछि सर एठी हरी बहुत पैसा को खर्च हो सर बोलते कहबो त धमका चमका कर ताल से पैसा दबो एरिया ई-कम PLI नोट करो PLI ELI कौन एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव एटा मन रखो ULI व्हाट इज ULI जे कहि दो से आईएस पाइबो जी कहि दो यूनिफाइड लेंडिंग यूनिफाइड लेंडिंग फैसिलिटी ताऊ ताली मार गोटे यूनिफाइड लेंडिंग फैसिलिटी बहुत बढ़िया किए एटा कहूची एटा कहि जेबे यूनिफाइड लेंडिंग फैसिलिटी शक्तिकांत दास बहुत बढ़िया से कौन कहला गोटे हला जैम यूपीआई एंड यूएलआई प्लीज नोट डाउन एटा गोटे नुआ ट्रिनिटेज देखछो तता भीतर की गोटे सब अछि कि संग संगे मारला से रोहित शर्मा भला पिटी के चले गला से मारी के चली गला से अरे बुझु के अरे सर देखो से कि ताली मार के चलीवानी से तार काम कर चली सलानी से जैम टा कोन जनधन आधार मोबाइल तापर हला यूपीआई तापर हला यूएलआई बुझु तो कथा कि बुझु कि नहीं तो मोर दुखी के अछि कोन माने हां दुखीटा कहीं होचो विकसित भारत फाइनेंशियल कंसोलिडेशन को reduce fiscal deficit. Is that clear?
What is financial inclusion? Financial consolidation. Financial inclusion or financial consolidation different ko. Financial inclusion you include everybody. Financial consolidation ala bring down the fiscal borrowing. Okay. GDP, GNP, 8 terms. Eta ke Xerox bane se bolega. Free trade and protection. यहाँ पर क्वेश्चन आस्पर है फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन. Should we go for free trade or we should protect our domestic consumers? So the answer is that we should eventually go for free trade. We should try to go for free trade so that there is competition. Free trade hele kon hobo je consumers will be benefited and you will get good quality. Please note down. Khali consumer ne price ne quality would be better. ता नाले सो इथे इनएफिशिएंट लोकोडा का तुम अधिक दाम रे बिकिवे जिन सोडा. अरे जो मोबाइल का एठी 40,000 में बाहर 40,000 मिलिवो एठी 50,000 मिलिवो सब बळे खराब होबो. गर्लफ्रेंड को फोन करा को फोन धरुनी हैंग हो जाउची बारंबार हैंग हो जाउची. फ्री प्रोटेक्शन. डीडॉलराइजेशन कोन को कमिटी को करेंसी तक डॉलर चली युद्ध कर सर रूपी रूबल पार्टनरशिप. इंडिया को मारो गोली रूबल पार्टनरशिप. रूपी रूबल पार्टनरशिप. रूपी रूबल एटा बड़ा बड़ा माइनर एलिमेंट. हमरो मोस्ट इंपोर्टेंट करेंसी जोटा फाइट करछि डॉलर अगेंस्ट एनबीबी. Chinese एनबी. यस गोटाला वन हला चाइनीज करेंसी. आ गोटे renminbi. युआन जापानीज करेंसी युआन. यूरो किए कहले ताली मार त को ताली मार की तो मेरे तो देखि देखो बहुत भलो कहूची. यूरो कोन ना आपनकर सुजन ना सुशील. So euro, these are the two currencies. Because China रो बहुत ट्रेड होची अनेक कंट्री संगे. So Chinese currency and euro currency. But can somebody put a figure जे how much is the transaction in dollar globally? Any guess? जो global trade होची, how much trade is being done through dollar? Put a guess. कहते 50%, 50%, right? इतने लोग 50%. So there is a but you take it from me that de-dollarization is still a myth. Dollar is still a very strong currency. But पचारिबे जे काहे कि डॉलर ता इतने strong हिच. Why dollar is so strong? Give me ना stability नहीं. Same thing answer हबनी. कोड डॉलर ता कोन हिच. अमेरिका रे जो इन्वेस्टमेंट हिची, please note down. People have the amount of investment in America is 6 times the GDP of US. Every country has invested in America 6 times. बुझु तो प्रत्येक देशर लोक सेठी व्यवसाय करछे. तमे जीवो से मार्केट देखियो सब बांग्लादेश रा टी शर्ट वो पुओ पे थर जाइथिली मु फास्ट अमेरिका जाइथिली मते करा मते बड़ बढ़िया टी शर्ट हो देखला तो सबुटो बांग्लादेश रा होचे टी शर्ट सबुटो सस्ता. ओके नाइ मो पुओ को बांग्लादेश रा यार किलो अमेरिकन एंड था. बुझु तो कथा. So every country has invested there. Okay. So very difficult. तापर देखो inequality को रखो. Inflation, stagflation, sustainable development goals. Hello. Can somebody tell me what is a debt trap? What is debt trap? तो कौन टा पचार कौन टा तम आंसर कौन चो? Taking more debt to pay out the interest of the earlier debt. Give him a big hand. To take loan to pay an earlier borrowing. When you have a situation, please note down, when you borrow money to pay for an earlier loan, तमे एते लोन नहीं छ से लोन सुझिया पे तुमको आउट लोन ना पूछ. तमे गर्लफ्रेंड को गोटे बढ़िया गिफ्ट देछ, परफ्यूम देछ,
ସେଇଟା ସହ ତମେ ଯାହାଠୁ 500 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛ ତାଠୁ ନେଇଯାଇଛ ବିକ୍ରାନ୍ତ ନେଇଛ सर विक्रांत को केवे दबो सर मो पाखु आसे सार 500 टका दरकार थिला विक्रांत को दबा दैट इज ए डेट ट्रैप when you take loans to pay an earlier loan that is called a debt trap. What is creative destruction? What is creative destruction? देखिए कि हमर सो ऑनलाइन रे कहम होती है सर ते कहले कि creative destruction एटा गोटे माडा हला कि विकेट रे बाजला कि बोलटा बाजला कि नहीं এটা কহিতলা Schumpeter. Please note down. There was an economist who coined this concept called creative destruction. Schumpeter. Schumpeter कहितला जेतले बे नुवा जिनसटा बाहर करूचे से पुराना जिनस को उड़े दबो जेतले सीडी बाहरला सेतले कैसेट को उड़ेला जेतबेले पेन ड्राइव बाहरला सीडी आउट हे गला. Have you understood now the meaning of creative destruction? When a new innovation, please note on, when a new innovation destroys an old product. शगड़ गाड़ी चलतला शगड़ गाड़ी जगह बस आसुला बस जगह वर्तमान सेटा माने गाड़ी कार. So these are creative and माने नुआ नुआ innovation है कि पुराना जिनिस खराब है. तो आमे कोनी जेरा खराब हे गला सर सगटे जाउतले भारी भल लागुतला भारी आनंद लागुतला झुली झुली जाउतले नाही नाही गोडा गाडी जाउतले सर बहुत बढ़िया लागुतला गोडा गाडी रे नाही क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एटा कहितला कि Schumpeter बुझि परछो इरेशनल एक्सुबरेंस कहले टी के सर जते बेले इन्वेस्टर एंथुसियाज्म है कि अधिक इन्वेस्टमेंट करबा एक्चुअली कॉस्ट ता कम थिबो ताटो अधिक इन्वेस्टमेंट करियो. बहुत बढ़िया कि एटा कहितला इरेशनल एक्सुबरेंस के टर्म यूज करतला जदि कहि देबे सर म आपन 500 टका पठेबी सर मो गोटे बहिर एक्चुअली पढितली सर बहिर ऑथर को नाटा भूली जाई सर गोटे बहिरे पढितली से ऑथर को नाटा भूली जाई कुलकुल होची टिके कहले टिके मो बहिरे पढितली से ऑथर को नाटा भूली जाई नहीं ना तो गलत चांस गला अरे से झियोटा कुलकुल होची कोन तको पचारंतु कौन मैडम कहले ग्रीनस्पान अरे सर रॉबर्ट जे सिलर ग्रीनस्पान 5 नेकी 40,000 अडी कौन से कहला तुमने लिखथिलो ना कौन कहलो तमे अरे बहुत बड़ा एलन ग्रीनस्पान अब कौन से पाठ से बने एलन ग्रीनस्पान जदि कहबो तमर मीटर टा जो है ना यूपीएससी इंटरव्यू रे 70% रहयो 70-80% के से फ्रेंच कहेंगे अमेरिकन से 17 वर्ष अमेरिका रिजर्व बैंक गवर्नर थिला फ्रेंच तो कर दला केबे तो फ्रेंच को कांदी बसे बंची से लोडा कांदी बसे तो कोई भी फोन करी कि रे एलन ग्रीनस्पैन इरेशनल एक्सुबरेंस होची कोन विक्रांत इरेशनल एक्सुबरेंस हला जेते बेले यू क्रिएट ए क्लाइमेट where the business people are expecting that things are going to be very good देखला को सरा दो देखला को सरा फेल्योर होनी है. So when you have very high expectation and the reality is much less, it is called irrational exuberance. Exuberance माने उछल कुदल ना भारी डेइंग पुली भारी पड़िया अछि ओ मते सर आयस मिली जाउची पूरा मिली जाउची उछल कुदल एकला को इरेशनल नाही हेई नी मा तो हेई नी इरेशनल एक्सुबरेंस एलन ग्रीनस्पैन एक कथा कहितला को कॉन्टेक्स्ट रे कहितला एटा को कॉन्टेक्स्ट रे कहितला सर को नाटा को मोर मन पुन टिके कोटा जीवन हां कोन से को कॉन्टेक्स्ट रे कहितला टिके केबे कॉन्टेस्ट रे कहितला सर जीवन 1996 रे नहीं सर बहुत बुराला यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस प्लीज नोट ऑन यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 बस 2008 रे जो फाइनेंशियल क्राइसिस हेतला सेटा को से कहितला इरेशनल एक्सुबरेंस तापछि एटा टिके नोट करो विक्रांत फाइनेंशियल मार्केट्स एंड रेगुलेशन आज पेपर रे बाहरी छी
जे आमर भारत रे वर्तमान फाइनेंशियल माने जो एटा कोन कहलो आमर फाइनेंशियल मार्केट is 140% of our GDP. आमर जो फाइनेंशियल मार्केट रे जो मार्केट वैल्यू अरे बुझी पड़छ कि नहीं द मार्केट वैल्यू इन इंडिया of the stocks is 140% of GDP. This has never happened before. तेणु जदि से स्टॉक मार्केट लांडू हला तर कौन हो इकोनॉमी लांडू हो बुझु तो कथा अरे बुझो कि नहीं आज जो स्टॉक्स था धर फॉर इंस्टेंस आई हैड बॉट Adani Wilmar stock, so the prices came down by 50%. धर 50,000 कोटी लोक लगे चलती सांगे से 25,000 कोटी ही गला बुझी पड़छ तो कथा have you understood me or not फाइनेंशियल मार्केट रे इफेक्ट कोन बुझी पड़छ ना नहीं जदि गोटे स्टॉक रे बहुत पैसा लोक लगे चलती और से स्टॉक ता बहुत उठला किछि दिन पर एकदम तळ को माडा हला मु से जो अदानी विल्मा स्टॉक ता किनथिली 3 वर्ष तळे इट इंक्रीज बाय 50%. मुगरिस आहुरी बढ़ियो 6 मास परे 50% कमिला तापर 50% कमिला I had to sell it off at 2 lakhs. I lost 2 lakhs. That is the only share I lost. बुझो तो कथा अरे चार दोसा रिपोर्ट करके मते ही साला गरीब लोगों को मार खाया तुमको दिलाना नहीं बुझले कथा तो so these are some of the things which will come है ना हाँ सो एटा नो जेरक्स नहीं जा सो एटा तमे हमें क्विकली जीडीपी टा देखि दवा जल जीडीपी देखा देखो बेसिक डेटा व्हाट आर द ग्रोथ इन 23-24 केते 8.2 और 24-25 रे केते होली भाबुची अरे 24-25 केते होली भाबुचो अगर सा पेन नमो सो 24-25 रे केते होची expected to be lower. 6 नहीं सेटा सार मु सही स्टेटमेंट कोनी 6.5 to 7 please note down 6.5 to 7 as per the economic survey हैला तापरला सीपीआई केते अछि 5.4 एटा को सरकार केते चाहुची please note down this all of you please note down this and then take a picture of this माने सीपीआई केते बोले बोस्ट केते सरकार केते चाहुची जे 4+1 माने 5 रे रहको चाहुची मनी सप्लाई ठीक अछि एटा ठीक अछि एक्सपोर्ट ता ठीक बढ़िया को चाहुची हमें रेवेन्यू रिसीट ठीक अछि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ठीक अछि एटा ठीक अछि ता माने हमर को एरिया में जे देखिया पड़ियो व्हाट आर द एरियाज वी नीड टू लुक एट GDP so growth if somebody asks you को एरिया में देखिया पड़ियो for 24-25 कोठी जिबा growth को काहे की because the previous year we had done 8%. अरे बुझो कि नहीं जो रेपो रेट कंट्रोवर्सी था बुझी गलो जीवन वर्तन रेपो रेट so therefore sin तुम आर्गुमेंट जित करियो जे सर लास्ट ईयर we had achieved 8.2% and this year the apprehension is that we will come down by about 1.5. So therefore if we reduce the repo rate it is likely to help in the growth. आंसर तो ठीक होची कि नहीं ना होनी होची सब ठीक अछि बाकी ओडा सब ठीक अछि एटा ठीक चलछि हैला कोनटा बुझली एटा कोन इम धलबो एठी
कौन आ रहा है? Select, close. हाँ, এটা কইছিল तुमको नहीं जा এটা पिक्चर नहीं जा तो এটা দেখুছে আমি বিকশিত ভারত প্লিজ নোট ডাউন বিকশিত ভারত বিকশিত ভারত বিকশিত ভারত হলা বিকশিত ভারত রে আমি को पोजीशन बर्तन अच्छे 5 रे 26 रे में जीवा 4 को और 27 को जीवा में 3 को सो क्वेश्चन अच्छे प्लीज नोट डाउन जे फॉर अचीविंग $5.4 trillion बुझले विक्रांत क्वेश्चन विल कम फॉर अचीविंग $5.4 trillion what is the growth rate required? Is it realistic? बच्चों कथा तुम नाटक करो तो मुझे क्वेश्चन पता हला is it realistic to achieve $5.4 trillion? So you said provided we achieve 8% growth. Please note down 6% growth rate हबो नहीं किंतु लागू ची कहला कथा उडा को एक्चुअल एकदम तुमको पचारिए do you think that we can achieve that target? Sir, we can achieve provided we achieve a growth rate of 8%. तापर कहबा एवडा सब एमटी we are the fastest growing country. तापर कहबा हमर अचीवमेंट रे कैपेक्स डबल हिची केते रे 12% रु 22% नहीं जे 26 नहीं जा तमे एटा को 26 नहीं जा सब कि जने नौची 26 तापर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भलो हिची फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमरो भलो हिची तापर loans have come down bad loans have come down तल कौन विकसित भारत रे कौन हिची प्रथम विकसित भारत कौन हिची कैपेक्स डबल हिची प्लीज नोट डाउन कैपेक्स डबल हिची तापर foreign direct investment has become $80 billion which is very high then bad loans have come down from how much from about 10% and more than 10% now to about 2% हैला फैक्चुअल कथा आ रहा कि नहीं अरे बुझो नहीं फैक्चुअल how has it happened सर एटा हैला किमती ना जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हैला बैंक्रप्सी लॉ हैला आउ डिजिटाइजेशन हैला प्लीज नोट डाउन तीनटा कथा रे ए जो जिनसोडा हेची अचीवमेंट हेची दिस फॉर थ्री थिंग्स व्हाट आर द थ्री थिंग्स जीएसटी डिजिटाइजेशन आउ बैंक्रप्सी लॉ टा कौन थिला कोनटा हाँ Insolvency. प्लीज नोट डाउन दैट लॉ इज IBC insolvency bankruptcy बुझी पड़छु तो तापर बजट रे कौन थीम थिला मु तुमको बारंबार पचारछि कौन प्रायोरिटी थिला तमे प्रायोरिटी पछले थीम कहउछो थीम पछले तमे प्रायोरिटी कहउछो ठीक है नोट करो एटा को नोट करो सेवेंदी पचारिबे थीम ताले थीम टा थीम टा हला एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग एमएसएमई और मिडिल क्लास प्रायोरिटी कोठी हला एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर बुझी पड़छो एती खाली मन रखो एटा देखो एटा पचाला खिनी संगे केते एम्प्लॉयमेंट हबो ना 4.1 को तापरे एबोलिशन ऑफ एंजल टैक्स प्लीज नोट डाउन एबोलिशन ऑफ एंजल टैक्स और कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़िबो कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ै चंती और लास्ट हला ग्रोथ हबो प्लीज नोट डाउन एम्प्लॉयमेंट हबो और फाइनेंशियल कंसोलिडेशन हबो और कोन हबो फाइनेंशियल कंसोलिडेशन हबो त माने कोन फिस्कल डेफिसिट ता कमेबो तको पचारिबे जे किमिति कमियो सर एमति कमियो किमिति कमिला देखो फिस्कल डेफिसिट केते थिला 6.4 थिला तापरे 5.6 हला तापरे केते हला दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग
बुझी परछो विक्रांत देखुछो तो डाटा देखुछो तो एमते डाटा थिले टिके तुमको आउ डिफिकल्टी हबो बजेट एट ए ग्लांस हला तर एठी भी एटा तुम नोट कर दिए एटा नहीं जा तुम छवि नहीं जा एटा हला तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग हला मोटा तो पठे दे मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज तो पठे देबे समस्ते एति खाली टिके पढ़ दो एटा एटा प्लीज नोट करो एग्रीकल्चर रे प्रोडक्टिविटी एंड रेसिलियंस प्लीज नोट डाउन प्रोडक्टिविटी एंड रेसिलियंस एटा ऊपर बहुत आजिकली क्वेश्चन आसुची जो मनकर एग्रीकल्चर अछि से माने एटा को निहाती देखो भल के जार एग्रीकल्चर स्पेशल पेपर अछि एते कोचे नेचुरल फार्मिंग देखियो तापरे एफपीओ प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बुझ परछु तो इंफ्रास्ट्रक्चर हैला now let us look at Odisha and India Odisha budget बुझी परछु तो Odisha budget हेले आ 5 मिनिट सरीवा Odisha budget हेले हम कोन देखिबा जे तुमको प्रश्न आसीबो how do you differentiate between Odisha and India so first हमें देखिबा share what is the share of agriculture in Odisha केते 21 our India केते what is the share of industry in Odisha 43 what is the share in all India services 36 55 ता माने हमें we are not doing well in services is that clear we are doing well in industry and agriculture note करो एटा को this is the growth curve एमती ग्रोथ होची कहारा भारतर आउ so it is closely following Odisha did very well in 2016-17 हला तो ए डाटा टा बुझी परछु कि नहीं तमे कहबो जे सर वी हैव डन मच बेटर देन इंडिया इन 16-17 तापर देखो एटा टे नोट करो but per capita income of Odisha is always less than that of India please note down per capita income is less कौन बुझलो सर्विसेज रे हमें कमी अछि per capita income रे हमें कमी अछि हैना माने एती डाटा थिले तुम पे कोन हबो ना तुमको सुविधा हो तापर पॉवर्टी देखो पॉवर्टी इज वेरी हाई इन ओडिशा पॉवर्टी हैना पॉवर्टी इज वेरी हाई तापरे जीरो हंगर रे भी ओडिशा माने अंडरवेट चिल्ड्रन स्टंटेड एनीमिया एडा करे सबु नियो सबु तरे सो पॉवर्टी वी हैव नॉट डन वेल इन न्यूट्रिशन वी हैव नॉट डन वेरी वेल सेतमे हमर एते एनीमिया इज वेरी हाई वी हैव कंपेयर्ड बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स एडा डाटा ता तम थिले तमे जति किछि पचार देला किए तमे संग संग कह दे परिबो बुझी परछु कि नहीं तापर एटा हला रिसीट केते टोटल बजेट होचे ओडिशा बजेट 2.65 लाख करोड़ स्टेट ये मन रखियो 2.65 लाख करोड़ हला दिस इज एक्सपेंडिचर व्हाट आर द हाइलाइट्स गोटा हला सुभद्रा योजना आ गोटा हला समृद्ध कृषक योजना व्हाट इज समृद्ध कृषक योजना 3100 टंका रे पैडी वुड बी सोल्ड एमएसपी चाइल्ड लेबर फ्री ओडिशा तमे केही कहि पाला नै कथाडा चाइल्ड लेबर फ्री ओडिशा तापरे अपग्रेडेशन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स प्लीज नोट दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग वेयर द चिल्ड्रन आर बीइंग फेड seamless connectivity of all gram panchayats with district headquarters this is a very major thing gram panchayat all gram panchayats would be connected to what to the district headquarters and then promotion of Jagannath culture and Odia Asmita एरा सब न्यू इनिशिएटिव हैला तुम पे पूरा कामटा कर दीची पूरा ओडिशा बजेट ओडा काम कर दीची तापर व्हाट आर द एरियाज ऑफ कंसर्न एटा टिके फोटो उठा गोटा हला एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी
Our productivity is half that of Punjab. Please note down. Our agriculture productivity is almost half that of Punjab. आम पर हेक्टर रे आमे 2000 केजी करूचे पैडी देखो गोटे हेक्टर रे केते केजी पैडी करूचे 2000 केजी पंजाब रे करूचे 4000 कहीं केमते होची बिकॉज इरिगेशन ताकर 99% irrigation amara 30% irrigation. So what is the most important thing? Irrigation. अरे बुझो कि नहीं, irrigation is the main factor. तापरे अब ये जो GVA innovation services, low allocation to education, revenue करना, need for more capital expenditure. है क्या? So I will end with this. Politely, some questions I've just done that. Quickly, we'll just finish this. Read FR and directive principle carefully, particularly positive discrimination. 15-16 टा टिके देखि दब 19 और 21 टा देखियो तापर judicial review and judicial activism. Article 370, 44, 352 and 356. Hello. ये जो कोलकाता रोड विषय आसीबो right to privacy. What is right to privacy? That you cannot disclose the details of the victim. जोटा गोटा sexually victimized heichi, you cannot show those pictures or reveal that name to the public. That will go against right to privacy. It is Bipul Saxena. Please note down. Bipul Saxena judgment कौन रहता तुम लेकिन यो Bipul Saxena a judgment रे Supreme Court कहतला जे if you are victimized in a rape, so those pictures and the name cannot be disclosed. बुझी पड़छो? तबरे royalty by leaseholders. This is again a very important judgment. Become autonomy to the state. Now the states will get full royalty. It will not be shared with the center. Sub-classification with the SC/ST, criminal error already kohichhachi, legislative immunity from corruption. Eta achi. Tapare constitutionality of electronic bond scheme. Appointment of election commissioner, bail and not jail. Please note down, bail and not jail. It is an important factor. Tapare ADM Jabalpur Puttaswamy case, bulldozing homes of accused. Jota Barchi, maintenance to Muslim women. Maintenance to Muslim women as per section 125. Tapare current affairs lekha, women's safety. Please note down, it Women's Safety Acts और हेमा कमिटी Kerala हेमा कमिटी तापरे lateral entry तापरे OPS NPS और UPS walk of amendment bill এটা তুমি ভালো ফটো নিও এটা একটা কোশ্চেন আসার চান্স আছে ওয়াক অফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ব্রডকাস্টিং রেগুলেশন বিল দ্যাট ইজ হাউ দে আর ট্রাইং টু কন্ট্রোল ওটিটি প্ল্যাটফর্মস বর্তমান তোমার যে নেটফ্লিক্স पे দেখুছ দে আর নট সাবজেক্ট টু এনি নেগোসিয়েশন তারপরে ইউনিভার্সাল সিভিল কোড কাস্ট রিজার্ভেশন ইলেকশন ইন জেএনকে চেঞ্জ ইন নেম অফ রেভেনশা কলেজ দিস ইজ ওয়ান কন্ট্রোভার্সি. And the last controversy is on the film IC-814, जो hijacking है चेतरे सेवन जो terrorists संधि they are using a Hindu name. बात करने दे बोलता, ताको notice देख सकती. International relations रे लिखा है last लिखी दिया international relations. कितनी काम करती सकाउ देखो तो तुम भाई पूरा तमरी पाई सब ये काम करती बुझलो. IR theories, it hala नाम और India strategic autonomy, Indo-Bangladesh, India and its neighbor, India, Russia, Ukraine, Israel-Hamas conflict,
even waning in importance, balance of power and balance of equilibrium. तुमको सब एति के हिचे आ तो लास्ट लिखि दियो एटा मिसलेनियस रे कोन आला क्रॉनिक कैपिटलिज्म पचारि परंती मनी बिल मिसक्लास स्टॉक मार्केट क्राइसिस ओके सो एगुडा सब मिसलेनियस पचारि परंती हैला तेरो एति की कथा तमे जदी टिके बुझिगलो तो तेरे देखि दबो ताल तमर कोनसी डिफिकल्टी हबनी तमे आ भितरे की ओटे रखो जो लियो 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 इज इट फाइन विथ ऑल ऑफ यू बुझिगलो सब कथा टे तरतर की कर कथा रेडी 8टा बजला ना बेची रेडी 8:10 हेला ठीक है गस ना बहुत कथा होय छै त टे पठी दो तो